Hi everyone, Ashish Kyal this side. Very warm welcome to all of you over here. This is a learning series by Ashish Kyal Trading Gurukul, wavestrategy.com, and very warm welcome to all of you. Pleasure to see you all here. We are going to talk about markets. बहुत ही important junction पे है market अभी. फिलहाल अगर आप देख रहे होंगे that it is at a very important level. The reason being there are multiple things that we are going to talk about today. One is there is a level of 17,756, which is a GAN level. Okay. The next level that we are going to observe is the channel resistance, which is now at 17,800 on the upside. The next thing is we are also standing on the lunar cycle. So are there participants who are following the lunar cycles? That is Purnima. So yesterday, today is being a lunar cycle. That is what is there. So multiple confluence of cycles are there. In fact, 55 days का जो cycle है जो हम काफी बार बात करते हैं, that 55 days cycle is also falling on 17th of August and 15th is already a holiday. So we are just there, we are approaching there. But this time it's a very different way. We are approaching to the 55-day cycle not by forming a low but possibly forming a top. लेकिन वो कहते हैं हम साइकिल की भाषा में इन्वर्जन, तो वो करेंगे. लेकिन इसके पहले एक बहुत ही क्विक पोल मैं लेना चाहूंगा दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू थिंक इज द निफ्टी ट्रेंड इन द कमिंग वीक. आने वाले वीक में निफ्टी का क्या ट्रेंड है? आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक पोल एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन जूम and participate in this poll and interactive session, you can simply join me here. What a fantastic week it had been, fantastic day. आज सुबह हमारा मेंटरशिप का लाइव ट्रेडिंग सेशन था. वी टुक अ ट्रेड. बाद में देखा मार्केट एक्चुअली फेवर में बंद हुआ, सो नथिंग चेंज्ड एंड वी टुक अ ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड. वी डिड नॉट टेक ऑप्शन बाइंग एंड वी आर looking at the market and it is working well so far. So we are going to see what's going to happen from here on. So before I move on, I just want to know how is the Josh, how is the excitement, and how is everyone doing? Wishing you all a very happy festival, which is Raksha Bandhan, which is yesterday. Someone is celebrating today also, like Purnima, which was yesterday and today as well. So how is the festival? How is the Josh, and how is everything looking? Fantastic. I'm ending the poll very quickly. बहुत ही interesting poll है guys. Any guesses? You can put it on the chat. क्या guesses है आपके? क्या लग रहा है ये poll में? I'm sharing the result. Very interesting. Absolutely bang on it. 50-50. That is bang on 50-50. Like a complete doji being formed on Nifty. कहीं पे नहीं जा रहा है मार्केट. ये रहा मेरा स्क्रीन जो मैंने शेयर किया. वाओ. After a long time we are seeing that happening. कि half of the people are bullish, half of the people are bearish. इसका मतलब है ऑप्शन में करना क्या है? ऑप्शन में कॉल भी बेचो, पुट भी बेचो. मार्केट कहीं नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए, साइडवेज है. तो ऑप्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, डिटेल में जाएंगे कि ऑप्शन पे कैसे देखना चाहिए आपको मार्केट. आज सुबह ही मैं एड्रेस कर रहा था मेंटीज को कि किस तरीके से आपको टेक्निकल स्टडीज के अलावा ऑप्शन को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, टाइम टेक्निक पे कि वेव थियरी पे, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे. तो वी आर गोइंग टू डू दैट वेरी क्विकली एंड we are going to do it in both English and Hindi because there are people from both the background. So English and Hindi mix is what we want to do. So let's just move forward and I'm going to open up a chart and I'm going to talk about very clearly what is the Nifty trend. Looking at a weekly chart, monthly chart, I'm going to go on the daily chart right now and we will look at over here channel resistance. So यहाँ पर आपको चार्ट दिख पा रहा है मेरा? Are you guys able to see my chart here, my screen, what I am showing right now, every one of you? चलिए, बहुत ही important level है. Pradeep, great to see you again here. Rahul Shukla, namaste. Great to see you. Manju, Ramath are again back here. Shalini, you are the first one to join in. I'm glad to see that you are learning a lot of things. Great to see Shiv Narayan Chaudhary who is raising the hand. तो चलते हैं आगे. ये चार्ट पे ध्यान देना है, ये चार्ट पे देखना है कि कहां पर क्या मूव लग रहा है और कहां पर थे हम और कहां आ गए. दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट ऑफ निफ्टी विथ अ क्लियर कट टॉप्स. कहां पर टॉप बना था? यहाँ पर. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे टॉप बनेगा और यहाँ से ही रिवर्सल होगा. व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर नाउ एट अ लेवल
where you need to get cautious. All the way I've been saying buy करो, buy करो, buy करो. For the very first time, आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करें या मेरे वेबिनार को फॉलो करें, आई एम टेलिंग यू टू बी कॉशियस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सी यहाँ पर टॉप बना, नीचे टॉप, नीचे टॉप, नीचे यहाँ से, एंड यहाँ पर डू यू थिंक वी विल फॉर्म अ टॉप अगेन? बिकॉज इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, वी विल गेट क्लासिक अपॉर्चुनिटी फॉर द शॉर्ट साइड. लेकिन विल दैट हैपन नाउ इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क. फिलहाल प्राइस कंफर्मेशन नहीं है, रेड कैंडल नहीं है. ये टुडे वी मैनेज टू ब्रेक द लो ऑफ यस्टरडे बट डिड नॉट क्लोज बिलो यस्टरडेज लो, and this is where we are right now. Basis of this entire time frame, if you are looking at this channel, this is the resistance zone, and इसे हम resistance इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदी करने वाले लोग बैठे हुए हैं. नीचे में this is the support zone that you will see on the chart. This is where the supports are lying. That the support zone जहाँ तेजी करने वाले लोग बैठे थे नीचे. We moved from the lower end of the chart to the upper end now. I'm not saying catch a top here, but I am saying this is also the level 17,756 जो मेरा gain level का target था. बहुत टाइम से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. Are you people following me on Twitter? Gain 17,756 का level is what I have been talking about over here for some time. RSI ओवरबॉट है, इसका मतलब ये नहीं मार्केट को रिवर्स जाना है. RSI ओवरबॉट का मतलब है यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीड से जा रहा है, बस. इट डज नॉट टेल यू कि रिवर्स लेना है. RSI ओवरबॉट का मतलब रिवर्सल नहीं होता. RSI ओवरबॉट का मतलब होता है स्पीड अच्छी खासी है, फरारी के स्पीड से जा रहा है फिलहाल मार्केट. दैट इज व्हाट वी कैन मेक आउट. सो ओवर हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ इज दिस सिंपल चार्ट वेयर यू कैन सी सिंपल चैनल working exceptionally well. Is it time to reverse our position from long to short? That's the question you have to ask. Okay, that's the question you have to ask. यहाँ पर are we going to reverse from this channel resistance ऊपर की ओर से नीचे? लेकिन ऐसे में ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है? चलते हैं ऑप्शन की ओर, बिकॉज ऑप्शन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिसपे आप स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हो. फ्यूचर्स में या तो आप शॉर्ट जाओगे या लॉन्ग जाओगे, लेकिन ऑप्शन के साथ में आप स्ट्रेटजी भी फॉर्म कर सकते हो. तो ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इस पे साथ में चाहे स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है और कैसे देखना है. लेकिन जो मैं साइकिल की बात कर रहा हूं आपके साथ में, आई एम गोइंग टू जूम इन दिस चार्ट अ बिट, जस्ट अ सेकेंड. यहां पर मैं जूम इन करूंगा. आई एम लुकिंग एट दिस साइकिल विच इज 17th of August. दिस इज अ 55 days बॉटमिंग साइकिल. इसके 2 से 3 दिन पहले बॉटम भी बना था. तो ये मैं निकाल देता हूं यहां से लेवल. साइकिल की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, बिकॉज समय बलवान है, उसे देखते हैं कि क्या उसका रुख है. तो यहां पर इफ यू आर गोइंग टू लुक एट इट, वी कैन सी अ लो फॉर्म्ड ऑन दिस रेड कैंडल. कैन यू सी दिस रेड लाइन? यहां से लो एंड रैली, रेड लो एंड रैली, रेड के यहां से लो एंड रैली. नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज द रेड अप्रोचिंग हियर. दैट्स द थिंग. लेकिन फॉल ही नहीं आया तो रैली कहां से होगा? That's the cycle we are looking at, which is in next 3 days. 2 working day के बाद ये cycle है. So the question is, will it form an inversion this time? खाली हम cycle नहीं, price confirmation भी use करेंगे. So will it form an inversion? That is very very important. You have to see inversion का मतलब है कि यहाँ पर low बना था, वहाँ top बन रहा है. That is what we call as an inversion. So that is the cycle. 17th of August लो बनेगा कि टॉप, लेकिन ट्रेंड चेंजिंग है. तो 17 अगस्त पे मैंने ध्यान बनाए रखा है. ओवरऑल साथ में लूनार साइकिल डालते हैं. लेट्स जस्ट लुक एट द लूनार साइकिल. सो आई एम गोइंग टू पुट इन द इंडिकेटर. आई एम श्योर यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट लूनार साइकिल. I was also speaking at ET now today afternoon at 2 o'clock. So it has been a marathon of webinar talking about how the market is looking like. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड तो बन ही रहा है. Something or the other we are trading. So if we are looking at this chart,
एज ऑफ नाउ। ओके, यहाँ पर लूनार साइकिल की को समझने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू हाइड अक्रॉस माय वॉल्यूम्स फ्रॉम हियर। लेट मी जस्ट रिमूव the volumes for now, and I'm going to just show you the lunar cycle. I'm going to remove all the drawings. Now that is important, and Purnima is especially important. What has happened in the past lunar cycles? Do you know the lunar cycle, guys? Are you aware about the lunar cycle? Give me a big yes if you are, and people on YouTube, if you are, then at least tell me a yes that you are aware about lunar cycle. आप फॉलो करते हैं lunar cycle को 28-29 days की। ऋतुराज, सुनील, शालिनी, निधि, so many of you are following this cycle. Wow. लेकिन ये साइकिल के साथ प्राइस कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, आई विल शेयर दैट आर्टिकल आल्सो विथ यू ऑल। क्या आर्टिकल था वो कि अलोंग विथ प्राइस, अलोंग विथ टाइम प्राइस कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिला वो देखना जरूरी है। People don't really pay attention to half of the thing. They do what they want to do, and then they say ये नहीं चलता। I am asking you to follow the whatever you are saying. You have to follow it in totality, not just half way. ठीक है, तो आपको totality में follow करना है। So let me also show you a research first on lunar, then we will go to the website and check. So अगर आप lunar cycle देख रहे हैं, I'm going to hide myself here. If you are looking at the lunar cycle, you might be able to see यहाँ पर there is a top formed and a down move, top formed and the down move. I think we have done it multiple times in this trend. In fact, ये जो top बना, now this is the most important part. This is the most important part. This top which you are seeing here is the top formed here on a lunar cycle and the channel. There is a confluence. Then if we saw a red candle and look at that reversal, wow, that's a move from near around 18,400 to 16,400, nearly 1,000 point fall. 1,000 point fall. Why is it at similar junction we saw before when the market crashed by 1,000 points? Is it clear, everyone? यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगा, लेकिन यहाँ से कुछ तो है। यहाँ पर से भी देखोगे तो यहाँ टॉप था एंड द क्रैश। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ टॉप था एंड द मूव डाउन। दिस वाज द ओनली प्लेस वेयर इट फॉर्म्ड अ लो, टू बी ऑनेस्ट, यही वाले साइकिल पे। यहाँ पर से टॉप था एंड 3 डेज का लो। सो वी कैन से एटलीस्ट 3 दिन का तो टॉप बनता है, if not more. I am not saying we will crash like this one. The point to be noting is this is the level which is similar to this part as of now. Okay, I'm so sorry. This is 18,400, not 1,000 points, to 16,400. Thanks for that. This is 2,000 points fall. Wow, I am mistaken there. 2,000 points fall. It's not 1,000. I'm not going to go aggressive, क्योंकि यहाँ से अगर वापस और 200 पॉइंट ऊपर गया ना तो बुल्स बोलने लग जाएंगे कि देखा 200 पॉइंट ऊपर आ गया और ये बोल रहा था 2000 पॉइंट नीचे जाएगा। I don't want to get into that ego fight. What I am trying to tell you, अगर यहाँ से previous लो के नीचे क्लोज मिलता है, possibility we might reverse. कितना गिरेगा वो देखेंगे। अगर रिवर्सल तो होने दो, पॉज तो होने दो, एटलीस्ट पॉज तो होने दो, then we will see. Okay, are you with me? So we are over here where we can see a similar possible scenario, but this time the momentum is strong and we are seeing a good up move. So I will wait for a close below the low. So आज का जो लो था उसके नीचे, मतलब 17,590 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है, then we will look for catching a top. Otherwise buy on dips and buy on dips. That is the strategy. Is it clear?
तो जो भी आप सुन रहे हो यहाँ पर वेबिनार से, एंश्योर यू अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी। हाफ हार्टेड नहीं समझना है, हाफ हार्टेड नहीं सुनना है। बुलिश लोग सुनेंगे कैंडल स्ट्रेटेजी, बेरिश लोग सुनेंगे लूनार साइकिल, करेंगे वही जो करना है और बाद में बोलेंगे नहीं चलता है। होता है ना, अगर हम बुलिश है तो हम बुलिश न्यूज सुनते हैं, अगर हम बेरिश है तो हम बेरिश न्यूज देखते हैं। So that's how it is, but you have to stay objective. That is very, very important. Are you understanding? चले आगे की ओर। Shall we look at the wave pattern also? Lunar cycle देखा, 55 days time cycle देखा, रेड और ब्लू चैनल दो। इन यहाँ पर shall we now move on to look at the wave pattern, what it is doing, what it is forming. चलते हैं आगे एंड देखेंगे ऑप्शन पे ट्रेड कैसे लेना है ऐसे सिनेरियो में। So I'm going to go on 1 hour chart of Nifty. I'm going to hide across, clear of the screen. I'm going to hide across the moon phases and that's the channel. So फिलहाल full moon है इधर, स्पेस भी है, अभी तो फिलहाल स्पेस है तो 17,800 तक जा सकता है निफ्टी, यहाँ से गुंजाइश है 100 पॉइंट्स आपको। ब्रेथ, just the last breath is what I'm seeing it is going to happen. So Nifty is in the last breath, ऐसा लग रहा है फिलहाल, लेकिन देखेंगे। ओके, द गैप इज इंपॉर्टेंट विच इज 17550 के लेवल के नीचे कंफर्म हो जाए। नाउ व्हाट इज द वेव स्ट्रक्चर सजेस्टिंग ओवरऑल, how is it looking like? Basis of neo wave pattern I am talking right now. I'm going to talk now on the basis of neo wave pattern. So neo wave pattern पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर पॉसिबल है कि A हो गया, B, C, D, this can be an E, F and G. Okay, this is an X wave. Are there neo wave practitioners here? Let me ask. Okay, I want to know how many of you are neo wave practitioners on Zoom. People, are you there on Zoom with me? I want to know how many of you are practicing neo wave, practicing, following or practicing, either of it. So you can I just want to know, like a big yes or no from you. Are you practicing neo wave or not? Wow, I can see so many of you are practicing that. Lovely, great. Chaliye, reading about neo wave, I can see someone now is reading. So Amit Vyas is saying yes, I am. Okay, lovely. Let's just see. Now is the fun part. Now is the most important fun part of the wave. Seriously. X होने के बाद this is a clear A, this is a clear B, move on the upside, wave C here, then within this C also I'm going to change the color. See, we had an A, B, C, D, E, F and possible G. This completes wave D here. Okay, so we had A, B, C, D. This is wave E going on right now. Right now that is going on. Are you able to see this? Wave E फिलहाल चल रहा है, everyone. Okay. That wave E, we might have wave F. So क्या expectation है? Possible या हो गया जो भी. Then we will have an F which will take prices here, which will look like a flag again. Then we might have a scenario. We are looking at it right now. E is complete or not, we have no clue. Maybe a one push up and then an F and then a G. This is how the entire diametric pattern will possibly span out, and look at the beauty of it. This is how E will tend towards equality with C leg, F will tend towards equality with B leg. तो मतलब कितना मूव नीचे का पॉसिबल है, इतने पॉइंट्स का। ये कितना है, 16,780 से लेके 16,400 तक। So around 300 points approximately, we can expect a move of around 300 to 340 points. That's the beauty of knowing wave theory. You know, आप future देख सकते हो. So we can clearly see that much of the move is possible from here on, and then we are going to have a wave on the upside. So let me just clear up this
and let me just mention this here as E equal to C. Is it clear, everyone? That's the GPS of the market suggesting that's how we might go. So the coming week up down kind of a movement. That's the beauty of wave theory. Are you interested in knowing more about wave theory? Isn't this amazing chart? So I am sharing across a chart which is on wave Elliott. So combining this wave theory with a lunar cycle, ये G कब बनेगा मालूम है डेट? Can you tell me कब होगा? Can you tell me? अमावस्या नहीं, 17th को, 17th of August, not the next full moon. तो टाइम हो जाए, ये बहुत छोटा चार्ट है. This might happen by 17th of August. All the mimicry can happen 17th 18th August के आसपास, can happen around that area. Just 2-3 days का game. And if we then break this low, then we know, boss, something is changing. So I'm going to keep a close watch now. If that level breaks, then we will know something is changing in the market, and we might want to see a very classic reversal. So that's very, very important, very clearly. And then we want to see the market. चलते हैं ऐसे में फिर ऑप्शन ट्रेड कैसे लेना? Do you want to see the option chart now? है but interesting है. Shall we look at the option chart right now? How to look at it? How to go about it? चलिए देखते हैं ऑप्शंस पे किस तरीके से फॉलो करना है. And people on YouTube, if you are liking this, do ensure you are subscribing to the channel. We are already crossed 29,000 now. तो चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे. आज हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे बहुत डिटेल में for 3 hours in the mentorship program, but right now I'm not going to spend that many hours. But let's just go on the option chart and let me share across the screen here. Are you guys able to see my screen on the Nifty option chart? This is from Go Charting, guys, and if you want code use करना नहीं भूलना. Go Charting पे AK20, AK27 नहीं है, AK20. Okay, so if you are looking at this is the open interest profile, left and right side. Very interesting development. 17,800 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो शार्पली बढ़ रहा है, मतलब ऊपर जाना मुश्किल है. नीचे में 1600 भी बढ़ रहा है, मतलब ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है. जीपीएस ऑफ द मार्केट भी वही बता रहा है कि कहीं नहीं जा रहा है, ये वाला ओवरऑल सिनेरियो साइडवेज में है. और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 17,400 का पुट, आज हमने 17,400 का पुट 15 मिनट के चार्ट पे जाके चेक करेंगे, which we shorted today. So mentees, did you sell 17,400 का पुट when that level was taken out? हमने डिस्कस किया था कि 17,720 के ऊपर. Are you there, guys? Mentees, are you there? Okay, so we have already sold those things. है वो लेवल. और एक और जो हमने कॉल के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पर 23 के नीचे 23 ब्रीच नहीं हुआ कॉल पे. तो ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ना, द वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल वर्क्स सुपर. इट टेल्स यू डायरेक्ट ऑप्शन चार्ट. ये जो चार्ट देख रहे हो आप, दिस इज एन ऑप्शन चार्ट. ओके, डायरेक्टली ऑन द ऑप्शन चार्ट यू कैन सी हियर volume profile being applied, and you can understand what is the pattern. So on this chart we have a sideways trend, break below the profile, some on the option we have a clear lower high and a lower low formation happening. If the low breaks on the downside, we will have a clear lower high and a lower low formation happening, which will suggest that the overall trend for market is possibly reversing for down, because call option में selling opportunity मिलेगी 23 के नीचे. तो Monday को तो off है, Tuesday को we want to see how is this option performing directly option chart. See, no price Vega, Delta, Gamma use नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट सिंपल प्राइस एक्शन ऑप्शन चार्ट पे वॉल्यूम के साथ. दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल
एंड ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल के साथ। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्निकल नहीं भी आता है, लेकिन आपको रीडिंग पता है कि कैसे ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल को देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट नहीं, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। So if you know how to see open interest profile, and if you know how to see that exactly along with the option chart, you can form superb trading strategy on options. Buy या sell दोनों के बारे में आप कर सकते हो. So we will be having a next weekend on option trading using technical analysis. Next weekend पे session है, 2 दिन का session है on option trading using technical analysis. You can do that on stocks, Nifty, Bank Nifty, you can do on every single thing. That's the best part about it. Do you want to be a part of that option trading program which is happening on the next weekend, option trading using technical analysis, which is going to be for 12 hours? Uske pehle, guys, there is a pre-session also. We will have a pre-session on options. We will look at option trading using Ichimoku Cloud. Option chart पे कैसे ट्रेड करना है, प्रोफाइल को कैसे देखना है, वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे देखना है, all of those things is what we want to do together. I just want to know from you all कि क्या आप मेरे साथ में हो इस चीज को देखने के लिए. We are going to do that study, research, everything together. Are you with me on that? Do you want to be a part of that? I'm taking a very quick poll right now. Do you want to be a part of making options the best instrument ever that you can trade exceptionally well? I'm asking you a question here. Option पे the best part is आपका view नहीं है. See, I'll tell you. If you are not sure whether you want to be buying the market or selling the market, you can still trade. You know, my colleague has just shared the link. I'll just share that window and I'll explain you. Suppose if you don't know whether market ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, you can form a strategy on option. That's one. If you are not sure whether this is going to be very clearly market sideways में, तो you can sell strangle. कौन सा strike select करना है? You know, that is very, very important. So let me also open up a chart and I want to share that across with you all. This is the link. Okay. Very clearly, this is what the strategy is going to be: option buying, selling strategy. You can see it here. You can also see from the various. We are also going to include Ichimoku Cloud from here. And यहाँ पर देखेंगे बहुत ही prudent way में कैसे उसे trade करना है. So be a part of this wonderful journey of option trading if you want to be. Okay. And this is very important. क्यों? क्योंकि अभी देखिए मैं आपके सामने एक और चीज रखने वाला हूँ. एक चार्ट में आपके सामने शेयर करता हूँ. मेरे वेबसाइट का है wavestrategy.com पे आर्टिकल एक मैंने पब्लिश किया था ऑप्शन के बेसिस पे. आई एम गोइंग टू जस्ट हाइड माई सेल्फ हियर. एक्सपायरी डे निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी डे का ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैंने फॉर्म किया था. ये रहा चार्ट. यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे आप ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं. थर्सडे को एक्सपायरी डे पे कैसे आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना है. यू कैन सी दैट माय कंबाइंड प्रीमियम फ्लो वाज 12.40 एंड निफ्टी वर्कड आउट ब्रिलियंटली. ठीक है कि 11 अगस्त को ये ट्रेड कैसे किया, कहां पर गया, कैसे चला, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर मेंशन्ड एंड यू कैन ट्रेड एंड मेक मनी. सिंपल सा चार्ट लिखा, खाली ये वाला चार्ट ओआई को समझा ठीक से. अभी लोग बोलते हैं मुझे ओआई पता है क्या होता है. आई नो हाउ टू यूज ओआई, आई नो हाउ टू लुक एट इट, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द वे इन विच इज द करेक्ट वे दैट यू हैव टू सी ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. So please make use of this opportunity. And the reason you are seeing this pricing is because we have launched an independence offer which is there, and that's why the pricing is that you are seeing here. So I'm going to share across the link. Here is the opportunity to be a part of clearly to be a part of that program, and you can simply love, and you will love this entire analysis that we are going to do. So I'm going to please take that step forward. I'm open for questions. Any questions? Basis of Purnima, basis of lunar cycle that we saw, neo wave that we saw, option chart, volume profile.
तो जो BMW की बात कर रहे हैं हम, BMW, this is all the BMW content that I was talking to you. So I'm just sharing the link across. Okay, I just want to know, 1 second. Here we are. That's the link, and here is the link. So here is the link of the BMW offer which I am sharing across, and you have to use this link. Clear है? यहाँ पर for the BMW offer that I have shared across. Fantastic. Great, guys. So the question here is, just a second, I am missing out the questions. Can we have a special section on script selection? आज हमने एल्गो क्रिएट किया था मेंटरशिप में, तो वो चीजें देखेंगे. सेम ऑन बैंक निफ्टी. देयर इज नो टाइम फॉर बैंक निफ्टी राइट नाउ. एंड okay, so how do I come to know about this option trading? Can I use that link? Yes, of course, Naveen, you can use the link that I have been talking about. You can use the link of option trading, and you can simply know about that. That's not a problem for me. Great. So I just wanted to share also one more thing, guys. We have an Independence Day offer running for the courses that we are talking about. So this is the Independence Day offer on website and also on the app. I want to know from each one of you, क्या आपने ऐप डाउनलोड किया है आशीष कैल ट्रेडिंग गुरुकुल का? क्या आपने अभी तक आशीष कैल ट्रेडिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड किया है? आई एम आस्किंग यू. आशीष कैल ट्रेडिंग गुरुकुल प्ले स्टोर पे एक ऐप है, डाउनलोड करिए वहां पर, एंड वहां से आपको बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफर मिलेगा which we call as Independence Day offer. Use this as an opportunity. I'm telling you, because I want to spread the learning. Use that as an opportunity, and you have done that. I can see Deepak, Saurabh, Sandeep, Sachin, Tham, Ritu, Raj, Pradeep. Wow, all of you have downloaded the app over. Fantastic. Chaliye, great, guys. So make use of this Independence Day offer. PS Chauhan, great to see you also here. Once you click on this link, you will be directed to a page where you can see all the details about various research services, including make use of that. And that's why the offer that you are seeing on the BMW is available still now because of this. Thank you very much, guys. I think I have explained you all in detail. Very warm welcome. Going to see you on board for OTTA next weekend. Prepare yourself. We are going to be, and I'm ending the poll right now. So the poll end kiya hai maine. Great to see so many of you are interested in option trading program. Next week mein hai. Dekhte hain, link maine share kiya hai. Be a part of this program, and I'm going to be discussing much detailed fashion. There is no prerequisite knowledge. Uma Shankar is asking to take full advantage of BMW. नहीं, आपको खाली ज्वाइन करना है, क्योंकि इसका प्री सेशन होगा. आपको वीडियोस दिया जाएगा जो आपको देखना है. आने के पहले एक प्री सेशन होगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग. स्ट्रेटेजी कौन सी फॉर्म करना है, स्ट्रेंगल करना है, स्ट्रेडल करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है ऑप्शन बाय और सेल करके, वॉल्यूम को कैसे देखना है. ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. सो वी विल डू इट टुगेदर. यू डोंट रिक्वायर अ प्री नॉलेज ऑफ इट. पे ऑफ चार्ट के साथ में. तो ये बहुत ही हटके प्रोग्राम है, because this is not a program which is going to explain you options क्या है. It will explain you options को use कैसे करना है to generate that passive income. That's the difference. So that's a huge difference. So ensure you are a part of that. साथ में एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा. हम 5 ट्रेड सेटअप्स करने वाले, डिस्टिंक्ट 5 ट्रेड सेटअप, यूजिंग Ichimoku Cloud, using volume profile, using open interest profile, directly looking at an option chart without worrying about option Greeks ki kya hota hai, and developing our payoff chart to see kahan paisa banta hai. For me, I trade options. I generate passive income using options. Jo paisa yahan se banta hai, then I invest for multi-bagger stock. That's how I keep doing it. So it works for me wonderfully well. So I want you to learn this science. This is possible. Traders can be created. It is not necessary traders are born and made. And we can clearly see so many of the mentees have been able to prove that time and again, right? So don't you want to prove yourself that market से पैसा कमाया जा सकता है? भले ही कॉल राइट करे या पुट करे या बाय करे, लेकिन समझना है कहाँ करना है, सिग्नल क्या है, क्यों करना है,
कौन से लेवल पे करना है, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। और ये हर जन कर सकता है, लेकिन लोग डर जाते कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, या लोग ऐसा सोचते कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता। Point is, are you able to consistently make money from markets, understanding the risk? That's the question you should ask yourself. Is there a consistency? Can I repeat the process 100 times? If you can, then you are on the right track of making money from markets. Okay, I think I have stretched a bit, but so many of you were asking me questions, so I thought I'll share that across. Thank you, guys. Love talking to you all. See you next weekend for the option trading program. This weekend there are no webinars, just in case you are thinking, because nahi hai, and make use of this offer under the Independence Day offer. Download the app also. वहां पर आपको courses पे discount मिलेगा. For advisory, you can see on the website. Use that and ensure that you are making use of the coupon codes mentioned on the app. वो use करना नहीं भूलना. And let me know how it is going and how you find it. You can tweet it across to me at the rate Kyal Ashish. Lots happening on the Twitter handle, and do ensure you are subscribing to the YouTube channel, which is there right now. Thanks a lot. Have a wonderful day.